And I would like to say, sometimes when if any war is there, Indian army used to go for fight against any country, against our fellows who are not favoring our country or at the borders. At that time, proper sammelans, colorful ceremony, cultural events are being conducted just to encourage, to motivate our Indian army. It's not an emotional day because I already have accepted my 11th student. Yesterday I had some conversation with of my friends, Dr. Kanak Tiwari, and I asked him, he said, just this time I don't have the time, and I want to speak something, some encouraging words for my students. So already he is a good principal in a very reputed organization, degree going class. He has said some line and that I am sharing because these lines already I have brought in my personal life. Which line I am going to say not only for your class 10, not for your class 11, not for, even in your practical life when you become citizen for this country. You have to serve your country, not only in the form of just sitting idle and being the burden on Indian economy. You have to serve yourself in any form, being a good entrepreneur. You can see Sri Krishna Idea Public School, more than 100 fellows, they are providing the job. More than 2,500 students, they are providing the quality education. It is called entrepreneur, businessman. They are helping somewhere. They may not be helping at the level of Adani, Ambani, JP God, but they are helping somewhere in this area by providing quality education and some needy fellows who need job. If you don't have this thing, mujhme hai lagne ka sahas, with line sent by Dr. Kanak Tiwari that I am going to share with you. That is for all the students including class 10. मुझमें है लड़ने का साहस, चाहे अंबर आग उड़े. Sometimes the 10-minute assembly is late, people, you get fainting. चाहे अंबर आग उड़े, चाहे बिस्तर सिर पर ढोले, राहों में अंगार पड़े हो, दुश्मन दोहरी लाम खड़े हो, अपमानित संबोधन पाए. Sometimes people will torture you. People will use embarrassing words for you. People will try to discourage you. People will try to insult you. But अपमानित संबोधन पाए, व्यंगों की बौछारें आए. People will comment. People will make fun for you when you are on your working way. भले कचारी गर्दन चूमे, भूखे नंगे दर-दर घूमे, लेकिन ऐसी क्रूर नीति की छाती पर चढ़ने का साहस, क्योंकि मुझमें है लड़ने का साहस, मुझमें है लड़ने का साहस. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. कभी मन में ये नहीं लाना चाहिए, लोग जो भी एग्जाम देने, परीक्षा देने जाने हैं, मन में ये कभी नहीं लाना कि मैं कमजोर. हमेशा आपने जो तैयारियां की है उस पर यकीन रखना चाहिए कि मैं 100% जो मैं एग्जाम में पूछा जाएगा उसका 100% मेरे पास तैयारियां हैं. ये मन में बैठा के चलना है, 100% से नीचे नहीं, सोचना ही नहीं. सबसे पहले हम लोग ये सोच लेते हैं कि जैसे 31 इसमें है, कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि 2-4 यही 100% कर सकते हैं. हो सकता है उन्होंने जो उनका सिलेबस है उससे ज़्यादा तैयारियां कर ली. सक्सेस के लिए 100% ही चाहिए, 110% नहीं चाहिए. तो अपने आप को और आप
एक चैनल बन रहे हैं। सिर्फ आप अपने के लिए नहीं, यहाँ पे जो 2000 बच्चे आपके पीछे हैं, उन्हें एक राह दिखाना है कि मैं किस तरह से सफल होगा। आप एक बॉर्डर लाइन को तोड़ने वाले, आगे बढ़ने के लिए बॉर्डर लाइन को तोड़ना पड़ता है। तो वो अग्रणीय सेना जो है, वो बढ़ने का गौरव आप लोगों को अभी प्राप्त हुआ कि पीछे में जो आपसे हैं वो सीखे आपसे कि वो जीवन में कैसे अच्छे कर, क्योंकि आप उनके बीच से आए हैं। हम उन्हें सिखाएंगे वो उतना प्रभावी नहीं होगा जो कि आप उन्हें सीख देंगे, क्योंकि जितनी बेहतर तरीका से उनकी कमी, उनकी खूबियां आप जानते हैं, वो मैं नहीं जानता हूं। एक जनरेशन गैप है हम में और आप में, और एक सदी का भी गैप है। बहुत अंतर पड़ता है एक सदी का गैप। आप लोग 21वीं सदी के हैं, हम लोग 20वीं सदी के हैं। आप लोग डेवलप हैं हमसे, हम लोग अपनी सोच के हिसाब से ही आपको सिखा सकते हैं, क्योंकि 20वीं सदी के हैं, 21वीं सदी के नहीं। बेहतर आप कर सकते हैं। हो सकती है आपकी कुछ कमियां हैं, क्योंकि उस पर कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि सर ने ज्यादा मेरे साथ कर दिया। ज्यादा इसलिए कर दिया क्योंकि ज्यादा प्यार होता है। अनजान व्यक्ति पे कोई एग्रेसिव नहीं होता है। सड़क पे कोई चल रहा है, गलतियां कर दिया, धक्का भी मारे, नहीं एग्रेसिव जल्दी होगी। लेकिन अपनों पे, आपके छोटे भाई होंगे तो उन पे गुस्सा जरूर आ जाता है अगर गलतियां करते हैं। वही चीज होती है। और सिर्फ अपनी ताकत को पहचानिए। जब सारे कम समय वाले क्वेश्चन हल हो जाए, तब वो उस पे हमें अटेम्प्ट लेना है। और ये 10th के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए मानदंड होनी चाहिए। जैसे IIT में जाए, कोई करें, कोई नीट के करेंगे या यूपीएससी के करेंगे, तो उस समय भी अपनी मानसिकता में यही रखना है कि मुझे पहले कमजोर पे अटैक करना है। एक सैनिक की जो रणनीति होती है, आपको अगर किसी युद्ध में सफल होना है तो विरोधी के कमजोर कड़ी पे आक्रमण कीजिए कि मनोबल टूटे। आप मजबूत कड़ी पे सबसे लास्ट में अटैक कीजिए। रणनीति तभी सफल होती है। आप अपनी मजबूत अस्त्रों का प्रयोग करें और विरोधी के कमजोर कड़ी पे आक्रमण करें। Respected MD sir, my friend and director of the school, Mr. Rajesh Chaudhary, and honorable principal sir. First of all, good morning. And of course, the teachers are standing just in front of my stage, controlling the assembly, my dear children. First of all, good morning to all of you. Good morning, sir. Just now I came to know that today is your last day of class 10, and my friend and director also invited me to come on the stage to say some things, inspirational words to all of you. First of all, I would like to say, this is not your last day of your life. This is your first day of your coming life. Never think this is the last. This is your starting point of your life. Whatever you have learned in our school, in your society, in your family, now the time came for the implementation of all these things
to your coming future, coming life. What is examination? Examination, no any examinations has the power to evaluate your strength. This is only a things that might be evaluated a little bit. What you have learned, that is a basic things that should be implemented in coming life. Never take any pressure. Examinations, what you also learn through this media, lot of students getting suicides, getting depressions due to this examination pressure. Never thinking this is the pressure of your life. Just celebrate this is as a festival. As our Honorable Prime Minister also sharing with the students of across the country, never think this is your pressuring life. This is your time for the celebrating. Okay? Everyone say a lot of things regarding your preparation and this examinations. I will not take too much time. Whatever you have learned from our respected teachers, respected principal sirs, just implement during your examinations. Never take any pressure on your head during the examination. Just feel free what you learn, just write down on the paper correctly and think this is not your last, this is your starting of your life. Okay? And in future, what you are doing in your life, whenever you are standing in the societies, do favor your country, do favor your society, do favor your family, and at the last, think about yourself. If you give some things to your country, if you give something to your society, your family, definitely, in my opinion, you are the achievers. Only getting money, getting good job, that is not a good thing. That is okay, somehow that is necessary right this time. Otherwise, whatever you learn, that should be implemented in your coming life. That is the actual examination. Okay? Okay? Best of luck for your coming examinations and coming future. Okay? Good.